chapter 11, text number 21. 7:11:21. Tamodama शौचम संतसः ख्यातिराजवम् ज्ञानं दया अच्युत आत्मत्वम भगवान निज को भगवान को नित्य दास बोले मने करे ज्ञानं दया अच्युत आत्मत्वम सत्यं च ब्रह्म लक्षणम. Now we are studying about the Adarsh Samaj Chaturvarna and next chapter will be Chatur Ashrama. So in this Varnashrama system now Narvani is explaining to Yudhishthira Maharaj. So in this he is saying what is the qualities, what is the lakshanam of the Brahmanas, what Brahmanas should do. Sama means manasanjama, steadiness of the mind. Sama. Dhamma means controlling of the senses. Indriya sanjama with Dhamma. Tapa means austerity, tapasya. Saucham means cleanliness. Santosa, to become happy in whatever the condition is. Whatever condition Krishna gives. Avasya rakhi Krishna. Santosa. Kyanti means khyama, mercifulness. Arjavam, simplicity. Jnanam, one should have knowledge about Supreme Lord. Daya, one should have mercy on all living entities. Daya means Achyuta Atmatvam, to consider oneself as the servant of Lord Achyuta. Satyam, the truthfulness. Satyam cha dhamma lakshanam. Sama, dhamma, tapasya, saucha, santosa, khyama, saralata, jnana, daya, सत्य भाषण भगवान निकट में सर्वोत्त भाव निज समर्पण एगुड़ी ब्राह्मण लक्षण. There are total 11 items in this. So essence of all these items is Achyuta Atmatvam. One should consider I am the servant of Lord Achyuta. Jasya asti bhagavati bhakti akinchana sarve guni satra smasati. All the sama, dhamma, tapa, saucha, santati, all the things will be automatically coming to one person if he is Achyuta Priya. If he is thinking that I am the servant of Lord Achyuta, if he is Krishna conscious, so automatically all good qualities will come. Buddy? The symptoms of a Brahmana are control of the mind, control of the senses, austerity and penance, cleanliness, satisfaction, forgiveness, simplicity, knowledge, mercy, truthfulness, and complete surrender to the Supreme Personality of Godhead. Saujam virjam dhruti teja tyagascha atmaja kshama brahmanata. Brahmanata means brahmana niti parayana. Brahmanyata prasada cha satyam cha kshetra lakshanam, qualities of kshetriya. What? Saujam. Saujam is युद्ध फील्ड में वारफेयर में भाग नहीं जाना. Saujam. युद्ध रे पराक्रम. Saujam. Powerfulness and valor. Saujam. अपराजय. धैर्य. तेज, दान, दैहिक आवश्यकता पाई विचलित न होगा. क्षमाशीलता, ब्राह्मण परायणता, प्रसन्नता और सत्य भाषण एगुड़िक क्षत्रिय लक्षण. युद्धे च अपलायन, ये भगवद्गीता में लिखे है. युद्धे च अपलायन, युद्ध समय में पीठ दिखा के भाग जाना नहीं चाहिए. युद्धे च अपलायन. कृष्ण खुद भाग गए. Krishna, all types of duality, that is why he is Supreme Lord. हमारे पास duality नहीं हो पाएगा. So Krishna, he is at a time with everybody. So his activity जन्म कर्म में दिव्यम, उनका भाग जाना भी दिव्यम. उनका युद्ध क्षेत्र से भाग जाना भी दिव्यम, because he knows I'll run away from the warfield now, but I'll be killing this person by someone else later.
at later time. He knows he time, place, circumstances, manner, when to be killed, How to be killed. how to be killed. Okay, buddy. To be influential in battle, unconquerable, patient, challenging, and charitable. To control the bodily necessities. To be forgiving. To be attached to the Brahmanical nature, and to be always jolly and truthful. These are the symptoms of a Kshatriya. देवक गुरु अच्युते भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम देव गुरु अच्युते भक्ति देव गुरु अच्युते भक्ति one should have devata guru and achyuta bhakti त्रिवर्ग पवित्र जीवन तीनोटी वर्ग धर्म अर्थ काम परिपोषणम आस्तिक्यम उद्यमः नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। कलयुग में कोई कुछ लक्षण नहीं मानते, वैश्य लक्षण की सुंदर है। देवता गुरु एवं भगवान विष्णु प्रति भक्ति धर्म अर्थ काम ये त्रिकोणर अनुष्ठान श्री गुरुदेव और शास्त्रवाणी श्रद्धा एवं सर्वदा अर्थ उपार्जन पाई उद्यम और निपुणता एगुड़े होची वैश्य लक्षण। Being always devoted to the demigods, the spiritual master and the supreme Lord Vishnu, endeavoring for advancement in religious principles, economic development and sense gratification, dharma, artha and kama, believing in the words of the spiritual master and scripture, and always endeavoring with expertise in earning money. These are the symptoms of a Vaishya. देवगुरु अच्युते भक्ति त्रिवर्गः परिपोषणम् आस्तिक्यम 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 मीन्स शास्त्र गुरु भगवान प्रति श्रद्धा आस्तिक्यम उद्यम नित्यम नैपुणम वैश्य लक्षणम शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्यमायया अमायया निष्कपट भाव शूद्र शुटू निष्कपट भाव में सेवा अमायया विदाउट एनी कपट विदाउट एनी माया शूद्रस्य सन्नति सन्नति में उच्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्हाट इज दिस वो टाली है ओके शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिनी अमायया अमंत्रयज्ञः अमंत्रयज्ञ में बिना मंत्र केवल प्रणति निवेदन करने द्वारा यज्ञ अनुष्ठान करेगा अमंत्रयज्ञः हि आस्तेयम सत्यम गो विप्ररक्षणम अमंत्रयज्ञ ही मीन्स कोई प्रचार कोई यज्ञ श्लोक बोलने का नहीं और प्रणाम करने। तो कलि युग में तो लोगों के पास श्लोक मंत्र क्या याद है, कुछ भी नहीं याद है। दे आर नॉट एबल टू ग्लोरीफाई एनीथिंग, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। तो दैट इज डूइंग प्रणाम तो बट ठीक है, दैट इज एटलीस्ट प्रणाम भी करना चाहिए। डोंट सी समाज रो उच्च वर्ण रो मनुष्य मान को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान को प्रणाम निवेदन करे। जिंदगी में इतना कष्ट है आपको समझ में नहीं आता है। डोंट सी एटलीस्ट सरेंडर फुल्ली टू कृष्ण। समाज उच्च वर्णर मनुष्य मान को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मान को प्रणाम निवेदन करवा, शौच निष्कपटता प्रभुकर सेवा मंत्र विहीन यज्ञ अनुष्ठान करवा, चोरी न करवा, सर्वदा सत्य भाषण करवा, गादी और ब्राह्मण मान को रक्षा करवा, एगुड़ी का शुक्लंकर लक्षण। Offering obeisances to the higher sections of society, the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas, being always very clean, being free from duplicity, serving one's master, performing sacrifice without uttering mantras, not stealing, always speaking the truth, and giving all protection to the cows and Brahmanas. These are the symptoms of the Shudras. This is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. This is men. Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. These are the men. Men should do these activities.
Okay, now the women should do some activity. Now next women, what women should do? Srinam cha pati devanam. Pati devanam means jevmane semanakara pati manako pujanya boli mane karanti. Srinam cha pati devanam तत्सुसुषा अनुकूलता तत्सुसुता सेवाकरो सेवा करना चाहिए अनुकूलता मीन्स फेवरेबल श्रीणाम च पतिदेवानां शुश्रूषा तत्सुसुषा अनुकूलता तद्बंधुषु मीन्स जो हस्बैंड है हस्बैंड का भी रिलेटिव आत्मीय स्वजनों को तद्बंधुषु अनुवृत्ति सही प्रकार अनुकूलता उनको भी उनका रिलेटिव्स लोगों को भी दैट वे इस वन शुड रेस्पेक्ट द वुमेन शुड रेस्पेक्ट अनुकूलता सही प्रकार अनुकूलता पति का संतोष पाई सेवन प्रति मध्य सद्व्यवहार करना उचित अनुकूलता च नित्यं तद्व्रत धारणम नित्यम मींस एवरीडे नित्यम तद्व्रत धारणम पतिव्रत स्वीकार करवा किंबा पति आचरण करते समस्त आचरण को निजे आचरण करवा whatever the husband is doing the same thing one should be doing because see here a man should be doing according to brahmana kshatriya vaishya shudra whatever the activities man is doing according to his qualification a brahman should do this kshatriya should do mention vaishya shudra the wife is later and the strata coming and the later so she should be helping to the husband may become a brahmana or a kshatriya or vaishya shudra whatever the husband is doing she should be helping पतिଙ୍କର सेवा करबा सबले पतिଙ୍କ प्रति अनुकूल रहबा पतिଙ୍କର आत्म स्वजन बंधु बांधव प्रति मध्य समान भाव में अनुकूल रहबा एवं पतिव्रत पालन करबा ये चारोटी पतिव्रता सिंहर लक्षण नारद स्टडी to युधिष्ठिर महाराज to render service to the husband, to be always favorably disposed towards the husband, to be equally well disposed toward the husband's relatives and friends, and to follow the vows of the husband. These are the four principles to be followed by women, described by chaste. Described as chaste. दाम्पत्य कलह नास्ति जिस दाम्पत्य संसार में मतलब मैरिड लाइफ में जिसका घर में फाइटिंग जो नहीं होता है दाम्पत्य कलह नास्ति तत्र सी स्वयं का आगता तत्र सी एट दैट प्लेस शी मींस लक्ष्मी देवी पर्सनली कम्स टू दैट हाउस वेयर देयर इज नो फाइट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ ना घर में ही होता है तो दैट वे पीपल आर हैविंग नो मनी लकी ने घर में होता है domestic peace, domestic warfare, universal peace. There is much contradiction. So everywhere, countries, cities, societies, at home, they are all fighting. Fighting just because whatever what may be the religion, so what they are fighting. So दाम्पत्य कलह नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता श्री देवी स्वयं आ जाते हैं. कहाँ लिखा है? पर्पट में लिखा है ना. थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा है. श्लोक नंबर 26 and 27. स्मार्जन उपलेपाभ्याम means गोमूत्र के द्वारा उपलेपन करना चाहिए, क्लीनिंग रखना चाहिए घर को. वाइफ का काम क्या है? समार्जन उपलेपाभ्याम गृहमंडन वर्तनैः गृह रही समस्त कार्य युक्त है वर्तनैः स्वयं च मंडिता नित्यम स्वयं च मंडिता मतलब खुद भी अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छा डेकोरेट करके अपने आप को रखना चाहिए. आजकल लेडीज को जो ओनली नाइटी पहन के रास्ते में चले जाते हैं, घर तो छोड़ो. No, this is mentioned in Shastra. So I am not saying this whatever mentioned.
स्वयं च मंडिता नित्यम, हमेशा क्लीन रखना चाहिए खुद को, ना कि 9 o'clock they are getting up because we are going for office and we are sleeping late, so we will be getting up late. This is society. And here adarsa samaj means adarsa samaj chaturvarna mentioned. If this lady should get up early, she should do gruha mandanam, घर का मार्जना करना चाहिए, घर को क्लीन रखना चाहिए, नॉट ओनली घर, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। स्वयं च मंडिता नित्यम, स्वयं च मंडिता नित्यम, परिमृष्ट परिच्छदा, परिच्छदा मीन्स बसन गृहस्थलीर उपकरण, परिमृष्ट क्लीन रखना चाहिए। कामी उच्च अवचेहि, स्वाधि, स्वाधि मीन्स पतिव्रता होना चाहिए, कामी पतिंगर इच्छा अनुसार काम करना चाहिए। कामी उच्च अवचेहि, स्वाधि प्रश्रयेण, विनय पूर्वक प्रश्रयेण, दमेन च, इंद्रिय संयम द्वारा, दमेन च, प्रश्रयेण दमेन च। See, the Sudras, they do the service of the 3 categories, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and service they do. And ladies lower than that they are put and they should do only service. See, इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता है। इसमें जो सर्विस करते हैं, सर्विस देते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो बहुत छोटा जाता है और हम बड़ा जाता है, उसके बगैर हम चले जाएंगे। नो, one has to depend on them also. अगर this lady is not doing, then where the man will go? Where he will go? To police station or something, they will not help. The man has to depend on the woman, woman has to depend on the man. The society, Brahmana depends on the Sudra, Sudra also depends on Brahmana. Everybody is required. Nobody is superior. Superior in this understanding that Brahmana is the head of the Lord. So he will be giving guidance. Like old man, the head man of the home, he gives the guidance of the home. So the part and parcel should be working toward the whole. तो क्या पढ़ते हैं? कामे उच्च अवचेहि स्वाधि प्रश्रयेण दमेन च, बाकी सत्य प्रिय प्रेमना, बाकी मतलब वाणी, लेडीज वुमेन प्यार से बात करना चाहिए, नॉट कर्कश होकर बात नहीं करना चाहिए। बाकी सत्य बात करना चाहिए, अच्छा से बात करना चाहिए। Not only to the husband, actually the lady should have silence. She should be talking to everybody in the polite way, normal way, not ugra way, no. साथ ही बाकी सत्य प्रिय प्रेमना, with love and affection, प्रेमना काले काले भजे पतिम, यथोचित समय रे, काले काले means यथोचित समय रे, काले काले भजे पतिम, पतिम को पति का बात सुनना चाहिए, भजन बोल तो पूजा करेगा। स्वाधि स्त्रींकर कर्तव्य पतिंकर प्रशंसा विधान पाई सुंदर वसन और स्वर्ण अलंकार सज्जित हेबा एवं सर्वदा परिष्कार और आकर्षणीय वस्त्र परिधान करी समाजन और अनुलेपन द्वारा गृह को सर्वदा परिष्कार और पवित्र रखा। तांकर कर्तव्य गृहस्थलीर समस्त उपकरण गुड़िक सुंदर भाव में सजाई रखा, धूप और फूल द्वारा गृह को सर्वदा सुरभित रखा, धूप फूल द्वारा एवं सर्वदा पतिंकर वासना पूर्ण करने प्रस्तुत रहबा, to become ready to satisfy the husband's needs. विनीत और सत्यनिष्ठा होई इंद्रिय गुड़ी को संयत करी मधुर वाक्य रे काल और परिस्थिति अनुसार पतिव्रता स्त्रींकर कर्तव्य प्रेम सहित पतिंकर सेवा करबा। A chaste woman must dress nicely and decorate herself with golden ornaments for the pleasure of her husband. Always wearing clean and attractive garments, she should sweep and clean the household with water and other liquids so that the entire house is always pure and clean.
She should collect the household paraphernalia and keep the house always aromatic with incense and flowers, and, and must be ready to execute the desire of her husband. Being modest and truthful, controlling her senses, and speaking in sweet words, a chaste woman should engage in the service of her husband with love according to the time and circumstances. Santushta alolupa. Alolupa means nirlopa. Lolupa means is hankering. Alolupa means not hankering, whatever, by God's grace. Santushta alolupa. Dakhya means seva karya atyanta nipuna. The cooking should be doing nicely. So all other services for domestic services should be doing nicely. Dakhya, perfect, expert. संतुष्टा अलूलूपा दख्या धर्म ज्ञान प्रिय. धर्म ज्ञान मीन्स धर्म का बारे में मालूम होना चाहिए. धर्म ज्ञान प्रिय सत्यवान अप्रमता. प्रमता मीन्स मैडनेस. अप्रमता मीन्स पतिव्रत व्यवहार अत्यंत यत्नवान. अप्रमता सूचि में सर्वदा क्लीन रहना चाहिए, सर्वदा पवित्र और क्लीन. सूचि स्निग्धा स्नेह से. पतिं तु अपतितं भजे. अपतितं मतलब जो पतित नहीं हुआ है. पतित नहीं हुआ मतलब नॉट फॉलन मीन्स जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो काम करना चाहिए, अगर वो काम नहीं करते दैट इज प्रॉब्लम. तो पतिव्रता श्रृंगार कर्तव्य से लोभ करिवे नाही एवं समस्त परिस्थिति संतुष्ट रहिवे. गृह कार्य रे से अत्यंत निपुणा एवं धर्म संबंध रे पूर्ण रूपे अवगता. धर्म संबंध रे पूर्ण रूपे अवगता. दो धर्म सी knows about dharma but she does not supersede. No, I will go to शनि मंदिर for doing puja. तुम घर में पूजा करो. Your place is there. घर में पूजा भगवान खुश रहेंगे उसमें. According to शास्त्र, Lord will become happy. No, will दिखावा. धर्म संबंध पूर्ण रूपे अवगता. Even if she knows fully about what the duties, but still they will be. से प्रिय भाषिणी, सत्यवादिनी, पवित्र एक भाव रे स्वाधी स्त्री सर्वदा सतर्क और स्नेहयुक्त होई से पतिंकर सेवा करिवे जे पतित महति. अपतितम means not fallen. A chaste woman should not be greedy but satisfied in all circumstances. She must be very expert in handling household affairs and should be fully conversant with religious principles. She should speak pleasingly and truthfully and should be very careful and always clean and pure. Thus, a chaste woman should engage with affection in the service of a household, service of a husband who is not fallen. See text number 21. So, samo dharmo tapa sautya shaucham etc. Okay, samo dharmo tapa shaucham santosho khanti arjavam ज्ञानम दया अच्युतात्मकम सत्यम च ब्रह्मलक्षण. ब्राह्मण का लक्षण क्या है? ऑल दिस क्वालिटीज प्लस अच्युतात्मा. ब्राह्मण इज डूइंग सर्विस टू अच्युत. ओके. क्षत्रिय का काम क्या है? कि सो मेनी मेंशन्स हियर. ब्राह्मण परायणता, ब्रह्मण्यता means ब्राह्मण. Kshatriya should be serving to the Brahman and Brahman should be serving to the Supreme Lord. Understanding? Huh? वैश्य 23 नंबर श्लोक. देवता गुरु भगवान विष्णु के प्रति भक्ति, डिवोशनल सर्विस टू देवता गुरु एंड भगवान. वैश्य एंड क्षत्रिय व्हाट इज दिस? समाज उच्च वर्ण को प्रणाम निवेदन करिए. इट इज ऑफरिंग ओबेसेंस टू द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य. तो परफेक्ट सोसाइटी. चतुर्वर्ण, परफेक्ट गुड वर्ण.
But if somebody, that means, if somebody is not doing Achyuta Puja, not worshipping the Lord, That means he's fallen. that means fallen. If he is Sudra, directly is not doing, but he should do pranam. If he is not doing pranam, that means fallen. जापतिं हरि भावेन जेवनारी, जापति means जेवनारी हरि भावेन निज पति को भगवान श्री हरि को परि मने करंती, जापतिं हरि भावेन भजे शिव तत्परः, शिव, शिव means लक्ष्मी देवी जैसे भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे जब अपने हस्बैंड को पूजा करो तत्पर, तत्पर अनुरक्त रखे करना चाहिए। हरि आत्मना हरे लोक, हरि आत्मना भगवान श्री हरि का चित्त संपूर्ण रूप में मग्न हुई, हरि आत्मना हरे लोक वैकुंठ लोक को पत्या शिव मोदते, पत्या निज पति को सहित शिव लक्ष्मी देवी को परि मोदते नित्य चिन्मय जीवन उपभोग करे। जो नारी लक्ष्मी देवी पदांग अनुसरण करी निष्ठा सहकारे निज पति सेवा करती, से निश्चित भाव में निज पति सहित वैकुंठ लोक को फेरी जाई महासुखरे सेठरे वास करते। दिस इज श्रीमद् भागवतम वर्ड्स। You have written very important. Same thing I am here to do. Means what? This is the perfect life. Who is telling? ये रोजालिन माता जी को हम बोलेंगे ये बात। Who is telling this? Actually, ये तो क्लास में लेना चाहिए। In class, when everybody is there, all the ladies, gents are there, they should hear this. Nobody studies Brahma story, all the story they hear, they चले, वो दे बड़े-बड़े हाँ, हर जगह। But आप जब घर पे जाते हो, you listen the story and then go back home. What is your duty there? Okay, hearing big Krishna कथा, चैतन्य महाप्रभु कथा, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज stories. But when you go back home, how is the others of Samaj? What the duties at your home? You don't know. The husband, duties of the husband mentioned. Husband should do. If he is not doing, husband is following. If husband is following, you are not doing seva to husband, that is different. But if husband is following, then he should do. आप बोले ना कि चतुर्वर्ण जैसे बनाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अगर अपना अपना धर्म भी पालन करे तो भी तो फॉलन नहीं हुआ ना। हाँ, सब माने हर जगह पे लिखा है कि हम भगवान को मानेंगे, वो जानेंगे कि हु इज द सुप्रीम लॉर्ड, उसके बाद बाकी डेमी गॉड्स को भी वो पूजा करेंगे, बट वो जानेंगे कि कौन है सुप्रीम लॉर्ड। उसके साथ अगर अपना अपना धर्म पालन करे तो ही इज नॉट फॉलन। Ultimately, whoever is surrendered to Krishna is not fallen. Okay. तो जो नारी लक्ष्मी देवी पदांग अनुसरण करी निष्ठा सहकारे निज पत्नी सेवा करती, इवन इफ पति अगर दे भी नहीं सकता है तो भगवान लेकिन आशीर्वाद देते हैं, लक्ष्मी देवी आशीर्वाद देते हैं। से निश्चित भाव में निज पत्नी सहित वैकुंठ लोक को फेरी जाई महासुखरे सेठरे वास करती। Then Narada Muni is telling, even if he is not qualified, because Narada Muni is saying, so Krishna will give. Understanding? Lord Kuberan Muni, he didn't have qualification because Narada Muni told the Lord will be visible to you. So Lord has. Bhishma Pitapana says कि हमने राष्ट्रीय शास्त्र पकड़ा होगा, भगवान जी को नहीं पकड़ूंगा मैं, नहीं पकड़ा। तो कृष्ण बोलते ठीक है मेरा प्रॉमिस टूटने तो प्रश्न है, but I am holding your promise. तो भक्त का प्रॉमिस नरसिंह ने अभी तो जस्ट पढ़े थे ना, जस्ट टू प्रूव प्रहलाद्स वर्ड, कृष्ण they came from the pillar, just prove his bhakta's words. It did as this payment by that. The woman who engages in the service of her husband, following strictly in the footsteps of the goddess of fortune, surely returns home back to Godhead with her devotee husband and lives very happily in the Vaikuntha planets. The woman who engages in the service of her husband, following strictly the footsteps of the goddess
of fortune surely returns home back to Godhead with her devotee husband and lives very happily in the Vaikuntha planet. Devotee husband means husband should be a Krishna Bhakta and wife should be serving. So, Satyam Vidatam Nijavruttya Bhasitam Nijavruttya Bhasitam Nijavruttya कौन? प्रहलाद महाराज. Nijavruttya Bhasitam he told and उनका बात को रक्षा करने के लिए सत्य बोल के प्रूव करने के लिए भगवान कृष्ण को बता रहे हैं. ये श्रीमद् भागवतम 7.8.17 सत्यं विधातुं निजभृत्य भासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपं उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं neither मृग न मानुष. Lord has come from the pillar. Prahlad Maharaj is there here also. Just to prove his devotee's words. So Lord is fully independent. He is not controlled by anybody. Only by his pure devotee's love. Just to prove his words. So Narada Muni is telling here this. If somebody is following the footsteps of Goddess Lakshmi Devi, the woman is doing service to the husband, Amayaya, without any duplicity, faithfully is doing service. Then she goes back to Vaikuntha Dham. Vaikuntha Dham and Golok Vrindavan. On top of that, Golok Vrindavan. Okay, next shloka. पत्नीଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରି ମନେ କରିବା. ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରି ମନେ କରିବା. ଶୂଦ୍ରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରି ମନେ କରିବା. ଶୂଦ୍ର should think Brahman is supreme Lord. And ଭୃତ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରି ମନେ କରିବା. Servant duty is to consider the servant duty is to consider his master as Bhagavan. ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ. ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେବେ. But husband should not think that I am the God. Gurudev should not think I am God. But the disciple should think that Gurudev is God. Understand? If some individual Jivatma, if he started thinking that I am Paramatma, I am the Supreme Lord, then fall down. वृत्ति संकर जाति नाम थी. अभी न संकर वर्ण का क्या क्वालिटीज है थोड़ा. ब्राह्मण परब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 1 4 श्लोकस yes to. For ladies for स्त्री धर्म 5 श्लोकस. Because society is hold the center of the half part is the woman. If women become polluted, society gone. Society become polluted. So women duty, see 21, 22, 23, 24. 4 slokas Brahman, Kshatriya, Vaishya. Then 25 starting Srinam. Srinam Chapati Devana. So 25, 26, 27, 28, 29. 5 slokas for ladies. And now he is saying वृत्ति संकर जाति नाम. संकर जाति मीन्स मिक्स कल्चर का. वृत्ति क्या है? वृत्ति संकर जाति नाम निश्चित जातिर मनुष्य मानकर जे माने चतुर्वर्णनकर अतिरिक्त away from the चतुर्वर्ण तत् कुल भवे तत् कुल तत् से मानकर कुल परंपरा भवे अचौराणाम चौर्य प्रति जो मनगर पेशा नहे. अचौर्चनाम अपापानाम जो मन पापी नहंती. अपापानाम अंत्यज्य निम्नवर्णर अंत्यवसायिनाम अंत्यवसायी का चंडालनाम. शंकर वर्णक मध्यरु जो मन चोर नहंती सेमान को कहा जाए अंत्यवसायी बा चंडाल सोपच एवं सेमानकर मध्य कुल परंपरागत वृत्ति रही. Among the mixed classes known as Shankara, those who are not thieves are known as Antevaishai or Chandals, dog eaters.
And they also have their hereditary customs. Hereditary custom. So they will be following their hereditary custom, whatever whatever they are doing, puja, archana, करना चाहिए. चंडाल, so they are the low birth. Okay, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, उसके नीचे चंडाल. स्त्री और वैश्य तथा शूद्र से जाति पार. So Bhagavad Gita Krishna is saying. So Chandala is lower than this because there are Varna Sankar. Varna Sankar means who is the father of the child, who is the mother of the child. Very not in a good form. But they should not do Chaudhya Vritti. They should not be doing the stealing activity. Chaudhya Vritti, no. Chaudhya Vritti means stealing activity. They should not be stealing. And stealing activity is lower than Chandala. Yes, stealing activity means the mentioned Sankara Varna ko madhyaru jeevan choro nuhanti. Choro category is different, another Chaudhya Vritti. And tena eva sa Bhagavad Gita mein Krishna is telling ki devata, they offer everything to the human being, and human being is not offering back to devatas, and they eat there for their own sense gratification. So they are still also, they are sure. प्रायः स्वभावविदो नूनां धर्म युगे युगे. प्रायः स्वभावविद प्रकृतिर गुणानुसारे विद नूनां मानव समाजर धर्म युगे युगे वेद वेद दृग्भि. युगे युगे means प्रति युग, every युग में. वेद दृग्भि वेदज्ञ ब्राह्मण मानक द्वारा वेद दृग्भि स्मृतो राजन. स्मृतो राजन, हे राजन एमती कुहाଯାଇଛି. राजन प्रत्य च इह सर्वक्रोध. प्रत्य means मृत्यु के बाद. च इह means इस शरीर में. सर्वक्रोध मंगलजनक. क्या मंगलजनक होएगा? हे राजन, वेदज्ञ ब्राह्मण माने जुगे जुगे जड़ प्रकृतिर गुण अनुसारे मनुष्यर आचरण को यह लोक और परलोक रे मंगलजनक बोली निर्देश करछंती. My dear king, Brahmanas well conversant in Vedic knowledge, While conversant with the Vedic knowledge, well conversant well conversed with the Vedic knowledge, in Vedic knowledge, have given their verdict that in every age the conduct of different section of people according to their material modes of nature is auspicious both in life and after death. meaning is that वेदज्ञ ब्राह्मण माने जुगे जुगे जड़ प्रकृतिर गुण अनुसारे मनुष्यर आचरण को, जो ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज करता मनुष्यर आचरण को इह लोक परलोक रे मंगलजनक बोली निर्देश करछन. दैट मींस ह्यूमन बीइंग should be doing activities according to Shastras, means text number 21 or not, whatever we studied. If somebody is following that, then iha janma and para janma, this life and the next life, he will become happy. वृत्त्या स्वभावकृतया, वृत्ति द्वारा वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृ हित्वा स्वभावजं कर्म, हित्वा स्वभावजं निज स्वभावोत्तम कर्म शनैः निर्गुणताम् इयात्. शनैः धीरे धीरे निर्गुणता दिव्य स्थिति इयात् प्राप्त होइबा. यदि केही तार स्वभावजात वृत्ति अनुसारे, यदि केही तार स्वभावजात वृत्ति अनुसारे आचरण करे तार से धीरे धीरे निज स्वभावज कर्म करी निष्काम भाव प्राप्त हुए. यदि कहीं निज कुल परंपरागत वृत्ति धीरे धीरे त्याग करी भगवान का सेवा करने की चेष्टा करे ताले से क्रमशः से समस्त कर्म रो मुक्त होई निष्काम भाव प्राप्त हो.
If one acts in his profession according to his position in the modes of nature and gradually gives up these activities, he attains the Nishkarma stage. Nishkama stage. Niskama stage. Niskama means no kama. Niskamana. Upyamanam mukhetram swayam nirvirjatam yam na kalpate punaha sutve uttam bijam chanasati. Upyamanam means अनुशीलन କରିବା ଫଳରେ upyamanam मुख्यतम बारंबार अनुसरण କରିବା ଫଳରେ स्वयं निर्बीजताम निर्बीजत या न कल्पते पुनः सुप्ति उक्तम बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तम एवं एपरि भावरे एवं काम आशयं चित्तम कामनम अतिसेवया विरज्येत अनासक्त होता है विरज्येत तथा राजन अग्निवत काम बिंदुभि हे राजन कृषि क्षेत्र रे बारंबार बीज बपन करा हेले खेत निर्बीज होई पड़े कृषि क्षेत्र रे बारंबार बीज बपन करा हेले क्षेत्र निर्बीज होई पड़े एवं सेतेबेले बीज बपन करा हेले मध्य से बीज नष्ट हो जाए ठीक जेपरी बिंदु बिंदु घृत द्वारा अग्नि निर्वापित न हेले मध्य प्रचुर घी निक्षेप करदा पड़े अग्नि निर्वापित होय सेपरी काम वासना अत्यंत लिप्त हेबा फଳରେ से समस्त वासना संपूर्ण रूपे निवृत्त होय very nice looks. My dear king, if an agricultural field is cultivated again and again, the power of its production decreases, and whatever seeds are sown, they are lost. Just as drops of ghee on a fire never extinguish the fire, but a flood of ghee will similarly. A flood of ghee will. Similarly, overindulgence in lusty desires mitigates such desires entirely. Lusty desires for everything, na? Understood this text? Lusty desires will short come. If you do cultivation in the field, this year did cultivation, every year next year did cultivation, उसके बाद उसका additional cultivation, and खेत तो सारा अगर कुछ नहीं देते only cultivation you are doing. Over a period of time, even if you put the good seeds, even if you put the nice seeds, अगर बीज भी अच्छा डालते हैं, then फिर भी fruit नहीं आएगा. It will be fruitless. Seed is good, but it is fruitless. Why? Because you have not put any sap in this. Essentially, you have not put. Similarly, if you put a bit ghee in the fire, a bit more then ghee nicely, fire will be very nice glowing. And you put tons of ghee in the fire will extinguish. Understanding? The same way, if somebody is doing Indra Dupti slowly, he is also doing more and more. But once you do full, then you will think, no, I am not doing enough, I will not do. Simply, Kama Vasana is Attanta Lipta Phalare, se Samasta Vasana Sampurna Rupa Nivruta Hoye. Three corollaries, three things he has told you. Last one I didn't understand. When somebody is indulging in so many of desires, somebody is wanting so money and he give a bit money, everybody बढ़ना चाहिए. But एक साथ भयंकर पैसा दे दोगे, उसके बाद टोटली एंजॉय करने का बाद मटेरियल संसार एंजॉय करने को बोल देगा, no, I don't want to enjoy more. हो गया. स्वामी उदार था बहुम ना शायद. Read again. You have to understand. At least 3-4 times if you read, then you will understand it properly.
My dear king, if an agricultural field is cultivated again and again, the power of its production decreases, and whatever seeds are sown, they are lost. Just, just as drops of ghee on a fire never extinguish the fire, but a flood of ghee will. Similarly, overindulgence in lusty desires mitigates such desires completely. जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम जस्य मीन्स जिसका जत लक्षणम प्रोक्तम और जो पूर्व जो बोला गया है 21 नंबर टेक्स्ट कन्वर्ट जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम वर्ण अभिव्यंजकम वर्ण प्रकाश का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि पुंस वर्ण अभिव्यंजकम जत अन्यत्रापि दृश्येत जत अन्यत्र अपि दृश्येत तत्तेन एव विनिर्दिशेत् तत्तेन एव विनिर्दिशेत् यदि कहीं उपरोक्त वर्णनानुसारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रଙ୍କର लक्षण गुडी को प्रकाश करती ताले ताको भिन्न वर्णर बोली माने करागले मध्य एही लक्षण अनुसार ताकर वर्ण निर्दिष्ट होए है concluding words here stood. If one shows the symptoms of being a Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudras as described above, even if he has appeared in a different class, he should be accepted according to the symptoms of classification. Chaturvarnam maya sushnam Guna karma vibhaga. according to guna and karma. What actions he is doing? If he is from Sudra family, his activities are Brahman. Then is Brahman. But he should be doing the reformatory process. He should go to a Gurudev, accept initiation, then he is Brahman. Not normal. But if accept initiation, after initiation, Diksha ceremony होने के बाद again he is indulging in the Sudra activities, he is not Brahman. After taking initiation, he should be coming to the category of Brahman, serving to the Lord. Then he is Brahman. Brahma janati the Brahman. Then he is the right. देखो यहाँ पे लिखे परपट में चतुर्वर्णन माया सृष्टम गुणकर्म विभाग फोर्थ लाइन में है ना तो यही बड़ी भाव रे आदर्श समाज चतुर्वर्ण श्रीमद् भागवतम रो सप्तम स्कंद रो एकादश अध्याय श्री भक्ति वेदांत भाष्य पूर्ण होला Thus end the Bhakti Vedanta purports of the 7th canto, 11th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled The Perfect Society, 4 Social Classes. Now will happen on 15 minutes is there. So we'll be continuing here. Don't stop. Continue. We'll continue this. Stop this, then again start. Not required. Continue. 13 minutes left. 13 minutes. So द्वादश अध्याय we'll continue this. द्वादश अध्याय आदर्श समाज चतुराश्रम. The Perfect Society, the 4 spiritual classes. This is 4 spiritual classes. And that is social classes. So what is more important? Spiritually one should be advanced. Of course socially also one should be intact because Krishna has created Dharma to Sakshat Bhagavat Pranitam, so we should respect that. See in this four classes, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, they should be worshipping to Achyuta. Achyuta is Jaya. They should be serving to Lord Vishnu. For Vaishya it is written to demigods also because वरना अगर कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? भगवान जी तो create किए सबको. Yes. So to demigods also, Vaishya also. But they should not forget that Krishna is the supreme Lord. But you see, demigods, Brahmanas and the supreme Lord, three लिखे. हाँ. So to supreme Lord also you place. But Brahman knows the supreme personality Godhead Krishna. Brahman also respects the demigods. All the Brahmanas are most dear to the Lord. But in Kali Yuga things are different. Brahman means Brahmajanati Brahmana, he should be pure Vaishnava. That type of Brahman. Okay, Dadas Adhyaya. Adarsa Samaj Chaturashrama. Chaturvarna and Chaturashrama. Chaturvarna Maya Sustam. Chaturvarna Maya Sustam Guna Varna. And the ashram also Bhagavan has created.
Now, Sri Narada ब्रह्मचारी गुरुकुले ब्रह्मचारी क्या करना चाहिए ना देखो आश्रम क्या है ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम द वेरी इंपॉर्टेंट दिस आश्रम फॉर मी मेंशन कब संन्यास कब वानप्रस्थ रहने का ऑल द मेंशन शास्त्र मजा है तो श्री नारद वाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वासं दान्तः वासन वसन रहना चाहिए where the brahmachari should stay gurukule brahmachari gurukule vasan danta means indriya संयम करना चाहिए WhatsApp mobile and आजकल what not happening दांत means निरंतर इंद्रिय संयम अभ्यास करेगा दांत गुरुहितम means निज लाभ ପାଇଁ नहीं गुरुहितम what is good for guru he should do गुरुहितम आचरण कि कैसा आचरण करना चाहिए ना दासवत he should understand as the servant of गुरुदेव दासवत आचरण दासवत नीचः means विनीत गुरु सुदृढ़ सहुदः गुरु का सेवा करना चाहिए कैसा ना नीच विनीत होके with humble ना तब विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया only by service he should do service physical service गुरु का काय सेवा बपू सेवा वाणी सेवा एवरी सेवा करना चाहिए सेवा सुख दुख नीचा गुरु सुदृढ़ सौदः बंधुत्व किंवा शुभ इच्छा सौदः नारद कहले विद्यार्थी कर्तव्य पूर्ण रूपे इंद्रिय संयम करबा पई अभ्यास करबा ओके मतलब दिस चतुराश्रम में वर्णन आश्रम में तो इंद्रिय दमन एवरीवेयर मेंशन दिस है इंद्रिय में सेंस कर ऑल द पंच इंद्रिय हमारा है पंच इंद्रिय विदो भोग के विषय वस्तु बाहर भगवान करते हैं ये पूरा कंट्रोल करना चाहिए कंट्रोल नहीं हो पाएगा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देने में वो ठीक रहेगा इंद्रियों को कंट्रोल दबाऊंगा नहीं मैं कुछ नहीं देखूंगा कुछ नहीं खाऊंगा कुछ नहीं पीऊंगा नॉट पॉसिबल हम सब देखेगा श्लोक प्रभुपाद और से engaging Krishna in Narada mentioned Lusikeya seva one has to engage the senses for this the Lord of the senses that is Bhakti Rucha Sarva Upadi Vinir Muktam I am this I am that no Sarva Upadi Vinir Muktam Tatparapena Nirmalam become cleansed by serving to the Lord so Narada कहले विद्यार्थी मानकर कर्तव्य पूर्ण रूपे इंद्रिय संयम करबा पे अभ्यास करियो तांकर कर्तव्य विनीत भाव रे श्री गुरुदेवंकर प्रति श्रद्धा सहकारे सौहार्द्य परायण हेबा एवं दासवत आचरण करिबा एंड सर्वेंट थिंकिंग दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड दासवत आचरण करिबा एही भाव रे महान व्रत आचरण सहित केवल मात्र श्री गुरुदेवंकर हित साधन पाई ब्रह्मचारी गुरुकुल रे वास करिया उचित भाई ब्रह्मचारी स्टेज इन गुरुकुल उन पढ़ाई करने में चला जाऊंगा घर नो जस्ट टू डू गुड फॉर द गुरुदेव by mercy of Krishna one gets a guru by guru's mercy one gets Krishna yes interconnected Narada Muni said, a student should practice completely controlling his senses. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. With a great vow, the brahmachari should live at the Gurukula only for the benefit of the gurus. खुद का बेनिफिट के लिए नहीं लिखा है. सायं प्रातः उपासित सायं काल means evening time प्रातः काल means morning time उपासित क्या करना चाहिए उपासना करना चाहिए किस का ना गुरु अग्नि और गुरु में गुरुदेव का उपासना करना चाहिए अग्नि देवता का यज्ञ करना चाहिए गुरु अग्नि हां यज्ञ पुरुष कृष्ण हाँ मोहन में भगवत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम हरे हरे यज्ञ नाम यज्ञ यज्ञ नाम जप यज्ञ से बहुत यज्ञ जप यज्ञ is the topmost so this
गुरु अग्नि अर्क, अर्क में सूर्य देवता, गुरु अग्नि अर्क सुर उत्तमम, एंड सुर उत्तमम मीन्स सुर मीन्स देवता, देवता लोग टॉप मोस्ट देवता कौन है? इंद्र, कृष्ण, सुरोत्तमम कृष्ण। सबका तो वो तो टॉप में है, देवता में जो है डेमीगॉड में टॉप कौन है? और डेमीगॉड का राजा है इंद्र, बट सुर उत्तमम, सुर उत्तमम सबसे ऊर्ध्व कृष्ण। हाँ, एवं श्री भगवान श्री विष्णु का क्या करना चाहिए, किस किस को पूजा करना चाहिए? गुरु अग्नि अर्क कृष्ण, गुरु अग्नि अर्क कृष्ण, अर्क अग्नि सूर्य कृष्ण। सांध्ये सुरोत्तमम, संधे संधे सकाळ संध्या दोनों टाइम में, संधे उभे च जदबाक मौन होके जतबाक, बाक को जत कंट्रोल करके जतबाक जपन ब्रह्म समाहित, सुबह शाम क्या करना चाहिए? ब्रह्म गायत्री करना चाहिए, गायत्री मंत्र, गायत्री ब्रह्म समाहित। प्रातः काल रे और सायं काल रे उभय संध्या रे समाहित चित्त हुई मौनता अवलंबन करी गायत्री मंत्र जप, गुरु अग्नि सूर्य और श्री भगवान श्री विष्णु का उपासना करेगा, ब्रह्मचारी का कर्तव्य। इन बिटवीन डोंट स्लीप, रिपीट सीरियसली, तब ये संसार को कितना कष्ट हो। ठीक है, बढ़िया। Being called by the spiritual master, the student should study the Vedic mantras regularly. Every day before beginning his studies and at the end of his studies, the disciple should respectfully offer obeisances unto the spiritual master. छंदांसी means गायत्री मंत्र या हरे कृष्ण मंत्र। छंदांसी अधियति, अधिक means पढ़ाई करना चाहिए, शास्त्र पढ़ाई करना चाहिए रोज। अधिक छंदांसी अधिक गुरु, गुरु means from गुरुदेव or Tharu, from the spiritual master. That's why online classes is going on. Gurudevs nowadays, that is online classes for their disciples. So one should hear the Guru Vani. Chandansi adhita guru auta chit sujamsita, auta means अगर बुलाते हैं तो बोलते ए इधर आओ, auta chit sujamsita, और सावधान हो गया, हाँ गुरुदेव can I help you like that. auta chit सुजन्विता उपक्रमे, प्रथमे अवस्थाने, उपक्रमे अवस्थाने च चरणों शिरसा नमे, सुन रहे हो? हाँ, चरणों शिरसा नमे, चरण को सिर में, हाँ करके ना, कितना सुंदर लिखे, ऐसा ऐसा करना चाहिए बोल के, चरणों शिरसा नमे। आप बोलते हो नहीं, वहाँ पे विष्णु रहते तो डोंट टच इट टू नो फीट। नहीं, that is true. that गुरु साहब गुरुदेव को ही बोलते हैं, हाँ गुरुदेव से the same thing. but disciple अपना यहाँ रास्ता पे तो निकाल नहीं देते हैं। लिखा है ना। disciple अपना रास्ता निकाल देते हैं। तो श्री गुरुदेव आह्वान कले तांको निकटरे नियमित वैदिक मंत्र अध्ययन करिवा उचित एवं प्रतिदिन अध्ययन प्रारंभ रे और शेष रे श्री गुरुदेव को सशब्द प्रणति निवेदन करिवा मध्य शिष्यंकर कर्तव्य। at the beginning and the end of studies and should pranam to Gurudev. बढ़िया। Carrying pure kushagrasa in his hand, the brahmachari should dress regularly with a belt of straw and with deerskin garments. He तो should, नंबर 3 पढ़ रहे हो? हाँ, sorry, नहीं, 3. Being called by the spiritual master, the student should study the Vedic mantras regularly. Every day before beginning his studies, ये तो पढ़ा ना मैंने? नहीं पढ़े, अब ध्यान नहीं रखते हो? हाँ, मैंने पढ़ा था. Every day before beginning his studies and at the end of his studies, the disciple should respectfully offer obeisances unto the spiritual master. At the beginning and at the end. You read 1, 2, 3 एक बार पढ़िए. 1, 2, 3. मैं थर्ड स्किप के आई थिंक 4 पढ़ दिया. पढ़िए एक बार, 1, 2, 3.
Narada Muni said a student should practice completely controlling his senses. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. With a great vow, the brahmachari should live at the Gurukula only for the benefit of the Guru. At sloka number 2, at both junctions of the day and night, namely in the early morning and in the evening, he should be fully absorbed in thoughts of the spiritual master, fire, the sun god, and Lord Vishnu. You And should be always thinking of the spiritual master. oh, this is the Gayatri you do. Huh? You And should by be- chanting the Gayatri mantra, he should worship them. You do this morning Yes. time, noon time, and afternoon, Ah. evening time. Being called by the spiritual master, the student should study the Vedic mantras regularly every day before beginning his studies, and at the end of his studies, the disciple should respectfully offer obeisances unto the spiritual master. मेखला अजीनवांसासी जटा दंड कमंडलुन विभ्रूया ब्रह्मचारीଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତା ବହନ କରିବା କିମ୍ବା ଧାରଣ କରିବା ବିଭ୍रूयात means they should wear or they should carry विभ्रूयात उपवीतम च ଏବଂ ଯଜ୍ଞ उपवीतम they should have the genuine उपवीतम ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଉପवीतम दर्भपाणी यथा उदितम दर्भपाणी अवस्थाରେ पवित्र कोशगास धारण କରିବା उचित दर्भपाणी यथा उदितम शास्त्र अनुसार जैसे लिखा हुआ है क्या करना चाहिए मेखला अजीन बसांसी मृगचर्म कावसन जटा दंड कमंडल ये सब धारण करना चाहिए ब्रह्मचारी कर्तव्य हस्तर कोशग्रास धारण करी शास्त्र निर्देश अनुसार नड़ार मेखला मृगचर्म बसन जटा दंड कमंडल को उपवीत धारण करवा Carrying pure kushagrass in his hand, the brahmachari should brush regularly with a belt of straw and with deerskin garments. He should wear matted hair, carry a rod and a water pot, and be decorated with a sacred thread as recommended in the Shastra. Sacred thread means peta. सायं प्रातःकरेत भैक्षम सायं मीन्स संध्या समय में प्रातः मीन्स सकाल मॉर्निंग टाइम में चरेत 12 बजे होते मॉर्निंग एंड इवनिंग शुड गो आउट भैक्षम क्या भिक्षा करने के लिए जाना चाहिए भैक्षम गुरवे तत् निवेदयेत गुरु के लिए वो जाके भिक्षा करना चाहिए गुरवे तत् निवेदयेत जो भी लेके आए कलेक्शन करके तो गुरु को निवेदन कर दिया बोलते नहीं आए लेके आए निवेदयेत भुंजित यदि अनुज्ञात एंड गुरुदेव बोलेंगे तो भोजन पका के भोजन भुंजित यदि अनुज्ञात न चेत उपवासेत तो चेत अगर गुरुदेव भूल गए नहीं बोले तुम खाओ बोल के नहीं बोले तो उपवास रहेगा one should become a menial servant to Gurudev then Gurudev चाहे दे या ना दे Krishna will give understanding of course Gurudev will give blessings but Krishna definitely will give blessings because he has created this तो ब्रह्मचारीଙ୍କର कर्तव्य सकाळे और संध्यारे भिक्षा संग्रह करिबा एवं भिक्षार समस्त वस्तु श्री गुरुदेव को दान करिबा गुरुदेव यदि आदेश दियंती ताले तार आहार ग्रहण करिया उचित श्री गुरुदेव यदि तांको आदेश न दियंती ताले समय समय रे तांकर मध्य उपवास करिबा उचित The brahmachari should go out morning and evening to collect alms, and he should offer all that he collects to the spiritual master. He should eat only if ordered to take food by the spiritual master. Otherwise, if the spiritual master does not give this order, he may sometimes have to fast. I'll complete here. और दो पढ़ के कंप्लीट करते हैं
यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। ओके, वेलकम। विल स्टडी दिस टू, हाँ टू। हाँ। So next day we should try to complete this chapter, because half if you stop, then 31 slokas should. 31 में से 7 will complete today. Tomorrow remain. हाँ, others will complete. सुशीलौ मितबुद्धख्या, सुशीलः मितब्रुक्, मितब्रुक् means जितनी दरकार सेतकी आहार करेगा कुछ। मितब्रुक्, he should not be eating too much. सुशील अत्यंत नम्र और सुंदर स्वभाव, सुशील। The brahmachari should be having sushila, not karkasa. Here another Prabhuji, here we have gone and who is giving prasadam, prasadam, he is very sushila. And another Prabhuji who is doing deity worship, difficult. So sushila mitabhruk, mitabhruk means he should be eating less. सुशीला मितब्रुक् दक्ष्य, दक्ष्य निपुण, सदधान, सदधान जितेन्द्रिय, सदधान में शास्त्र गुरुदेव को वाणी के पूर्ण सदा समन्वित, सदधान जितेन्द्रिय, इंद्रिय संयत किया, यावत् अर्थं जितनी दरकार, व्यवहारिक, व्यवहारिक स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च, स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु, स्त्रीषु लेडीज हो बाबा नहीं जाएगा आपका में। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी should not think about it. स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु, स्त्रीण व्यक्तिकर सहित, not only the women, the people who are associated with the women, उनके साथ भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, आजकल के ब्रह्मचारी। हाँ माता जी बोलिए। ब्रह्मचारी का कर्तव्य सुशील और नम्र होगा। ब्रह्मचारी का कर्तव्य सुशील और नम्र होगा। परिमित आहार करिबा, परिमित आहार लिमिटेड फूड वी शुड टेक, सक्रिय दक्ष होगा, सबବେଳେ एक्टिव रहना चाहिए, भगवान का सेवा करने के लिए दक्ष होना चाहिए। दक्ष मींस इफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हाउ वी हैव टू स्टडी शास्त्र टू हैव टेक एक्सपर्ट। सत्य दक्ष होगा, श्री गुरुदेव शास्त्र निर्देश प्रति पूर्ण श्रद्धापरायण होगा, with full attention one should do service to Gurudev and should have faith in शास्त्र। जितेंद्रिय होगा, कंट्रोलिंग सेंसेस, एवं स्त्री ओ स्त्री स्त्रीण मानक सहित जितनी दरकार सेतकी व्यवहार करेगा, as much required उतना, उससे ज्यादा नहीं, और कभी भी अकेले में नहीं, आगे आगे पढ़ेंगे, never in a secluded place, and again for the tomorrow we'll study this. So brahmachari's duty is this. A brahmachari should be quite well behaved and gentle and should not eat or collect more than necessary. He must always be active and expert, fully believing in the instructions of the spiritual master and the shastra. Fully controlling his senses, he should associate only as much as necessary with women or those controlled by women. Those controlled by women. ऐसा लोग आज ज़्यादा है। Those controlled by women, handpicked. हर घर में है। घर में है। Whatever the woman says, yes, yes, madam. So, okay. So brahmachari should be very careful not to mingle with those type of people. Varjayet pramada gatham. Varjayet means to reject. Pramada gatham means talking with the ladies. Talk. प्रमोदा गाथा। Pramada gatham. गाथाम में सुंदर एन्चेंटिंग वर्ड था, प्रभु जी कथन नहीं करना चाहिए। वर्जयेत प्रमदा गाथाम, अगृहस्थ, अगृहस्थ मीन्स जो लोग गृहस्थ नहीं एक्सेप्ट, जो गृहस्थ आश्रम एक्सेप्ट नहीं किए हैं, ब्रह्मचारी। गृहस्थ दे कैन टॉक समटाइम्स बिकॉज़ दे सोसाइटी में रहते हैं, बट ब्रह्मचारी शुड नॉट बी टॉकिंग टू दिस वुमेन। वर्जयेत प्रमदा गाथाम अगृहस्थ बृहद्व्रतः, बृहद्व्रतः मतलब ब्रह्मचारी व्रत पालन के पद, बृहद्व्रतः, ये व्रत बहुत कठिन व्रत है। बृहद्व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियों वेरी डिफिकल्ट, प्रमाथीनि
अत्यंत बलवान इंद्रिय, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरद्यपि यते मनः। जो यातना करते हैं, जो ऑस्टेरिटी करते हैं, उनका भी मन को भी इंद्रिय ले लेगा, तो मन को नहीं छोड़ने का, इंद्रिय को नहीं छोड़ने का, हली नहीं छोड़ने का। तो ब्रह्मचारी जे माने गृहस्थ आश्रम ग्रहण करि नाहंती सेमानकर कर्तव्य दृढ़ता पूर्वक स्त्री लोक मान सहित कथोपकथन किंबा स्त्री लोक मान विषय रे कथोपकथन त्याग करिवा, आइदर टॉकिंग टू द वुमेन और द टॉपिक्स अबाउट द वुमेन should reject. Unpacked men. Not only that, talking to the women or topics about women. स्त्री लोकଙ୍କର ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବଳବାନ ଯେ ତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ କରିଦେଇପାରେ। Text number 7. A brahmachari or one who has not accepted the grihastha ashrama, family life, must rigidly avoid talking with women or about women, for the senses are so powerful that they may agitate even the mind of the sannyasi, a member of the renounced order of life. We'll end here. We'll end here. 8, 9. Two only brahmachari part will be over, then grihastha will become more on first. Okay, two will be there, brahmachari duty. ब्रह्मचारी जो मैंने गृहस्थ आश्रम ग्रहण करना कर्तव्य अत्यंत दृढ़ता पूर्वक स्त्री लोक सहित कथोपकथन कि स्त्री लोक मान विषय कथोपकथन त्याग करवा, कारण ये बलवान जे सन्यासी मन विचलित कर। ठीक अच्छे, बिकॉज साउंड इज कमिंग टू विल बी स्टॉपिंग हियर। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, नमो वैष्णव की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि।